So chapter number 1 OC Henry Fayol's 14 principles of management. सबसे पहले आपको हेनरी फेयोल का when was he born and when he died वो टर्म भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है. तो हेनरी फेयोल उसका पीरियड कब था 1841. राइट डाउन 1841 टू 1925. अब कई बार वो लोग पूछते हैं कि वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था कि कोई और कंट्री, रशियन पूछ लेते हैं, अमेरिकन. सो यू हैव टू रिमेंबर ही वाज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर. अंडरलाइन फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर. He was a French mining engineer and he turned to a leading industrialist and a successful manager. Okay, so अभी इसका जो 14 principles of management है उसने एक बुक लिखी. तो उसका बुक का नाम भी एग्जाम में पूछते हैं, तो बुक का नाम लिखो. In his book General and Industrial Administration, General and Industrial Administration. ये उसकी बुक का नाम है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एंड हेनरी फेयोल दे आल्सो आस्क who is known as the father of modern management. तो आंसर क्या होगा? हेनरी फेयोल is known as, इसको हम और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ, प्लीज राइट डाउन, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. So if they ask in your exam, explain 14 principles of Henry Fayol, ठीक है, of management. So your first paragraph of introduction should be this, that you are telling who he is. उसका टर्म क्या था? वो फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर था, turned into an industrialist. उसकी बुक का ये नाम था. He is also known as father of modern management. And then you start your answer. So उसके 14 principles, full attention here children, क्योंकि आप अभी इसको याद कर लेंगे. योर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के लिए हमारे पास कोड है. हमारा कोड क्या है वो हम इधर बॉक्स में लिख रहे हैं. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एक बच्चा था जिसने अपने फादर को पूछा, डैड, फर्स्ट इज डैड, डैड यू सी यूएसएसआर, डैड यू सी यूएसएसआर. तो उसके पापा ने क्या बोला उसको? ओ आई सी. यदि तुम गिनोगे तो ये 14 हो गया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कोड है हमारे पास. डैड यू सी यूएसएसआर, डैड सेज ओ आई सी. सो सबसे पहले हम 14 प्रिंसिपल्स के नाम याद करेंगे. हेडिंग ही नहीं पता तो अंदर क्या लिखने वाले हो? कुछ भी नहीं. ओके, सो फर्स्ट प्रिंसिपल्स. नाउ इसको ऐसे याद करो कि एक डैड और एक बच्चे के बीच में जनरली रिलेशन कैसे होता है. दे टॉक अबाउट वर्क, दे टॉक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी, कमांड, डायरेक्शन. तो वो जो चीजें हैं, बिकॉज अ फादर वांट्स अ चाइल्ड टू बी सेटल्ड इन लाइफ. ओके, उसके लिए वो स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, डिसिप्लिन की भी बात करते हैं, ऑर्डर की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं. ओके, इनिशिएटिव लो तुम, ये सब बात करते हैं. यही वर्ड्स है आंसर में. सो अब भी नेक्स्ट 10 मिनट्स में मेरी क्लास में सबको याद होने चाहिए. फर्स्ट कीवर्ड टी से लिखेंगे, डिविजन ऑफ वर्क. सारे के सारे 14 प्रिंसिपल स्टार्ट विद प्रिंसिपल्स ऑफ, आगे प्रिंसिपल का नाम लिखो. फर्स्ट डी, प्रिंसिपल्स ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ किसका प्रिंसिपल? डिविजन ऑफ वर्क. फर्स्ट डी इज प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क. फिर ए, डैड. तो ए से प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. चिल्ड्रन ये बात तो ध्यान रखो, फादर है, उनकी अथॉरिटी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी. वर्क के लिए वो हमेशा तुमको मोटिवेट करेंगे. प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क फर्स्ट है, सिर्फ लिखना नहीं, साथ में याद करना है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ, यस
यस, बीच में गैप छोड़ना है 4 लाइन्स का। हाँ तुम एक बार साथ में लिख के फिर एक एक अपन एक्सप्लेन करेंगे। एक बार तुम लिखो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो सबसे पहले वर्क की बात हुई, डिविजन ऑफ वर्क, उसके बाद ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, ओके वापस से डी आ गया। सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ऐसा तो कोई सी पेरेंट्स आर लाइक दे फाइंड दे यू नो दे लाइक कि हमारे बच्चे में थोड़ा तो डिसिप्लिन हो। सो इट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। एनीवेज यू आर टॉकिंग अबाउट फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, अपने फादर को याद करो ना। प्रिंसिपल ऑफ डी से डिसिप्लिन। ओके, तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क, काम बांट लो बच्चों घर में। उसके बाद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी तुम्हारे फादर की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी। थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। कौन सा फादर है जिसको डिसिप्लिन नहीं चाहिए? एक नॉर्मल लिमिट का डिसिप्लिन हर घर में चाहिए। ओके, तो डैड इज व्हाट वी कवर्ड। मेरे लिखते लिखते तुमको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर, यस और जे को अंदर लो ना। ओ ओके, ओके नेक्स्ट, यू, यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, मम्मी को एक बात बोल रही है, पापा को एक बात बोल रही है, मैं क्या करूं? ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक मैनेजर है जो सबको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सो फोर्थ प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, दैट इज फोर्थ। तो हमने यू भी कर लिया। सी, सेंट्रलाइजेशन। यू कैन लर्न लाइक दिस, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन हम बोल रहे हैं, centralized power of my house is my father, like that you can learn it. Okay, so next is principle of centralization. Fifth is principle of centralization. Principle of centralization. So division of a work, authority and responsibility. Next D is discipline. उसके बाद U, unity of command. C, centralization. ये 5 किया हमने अभी तक. Next is USSR. तो 6th वाला हुआ U. So U is unity of direction. 6th point. Principle of unity of direction. Write down. Principle of unity of direction. So U हो गया. अब डबल S पे जाएंगे. 7th. S से प्रिंसिपल ऑफ स्कालर चेन क्या होती है वो मैं बताती हूँ. अभी एक बार हेडिंग लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ स्कालर चेन. प्रिंसिपल ऑफ स्कालर चेन. तो फर्स्ट S is done. 8 next S, principle of stability of tenure. Principle of stability. बार बार बोल के साथ में लिख के अभी लर्न करो, बाद में क्या होता है. प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. ठीक है. 8th. नाउ 9th. डबल एस खत्म कर चुके हैं. 9th में हम जाएंगे आर की तरफ. 9th इज आर, रेम्यूनरेशन. काम करेंगे तो पैसा तो मिलना है ना. प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन.
प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन. तो डैड यू सी यूएसएसआर हो गया डैड का पार्ट. बच्चे का पार्ट. अब फादर बोले ओ आई सी. सो 10th इज ओ. ओ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर एंड डिसिप्लिन हर फादर को चाहिए. डिसिप्लिन भी आया है आंसर में, ऑर्डर भी आया है. ओके, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. इलेवेंथ ओ आई सी. आई में लिखो 11th आई प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. तुम इनिशिएटिव तो लो ये प्रूफ करने के लिए कि तुम अच्छे हो. सी द स्माइल ऑन फेस ऑफ योर पेरेंट्स. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. ओके, सो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आई हो गया. अब 12, 13 एंड 14 SEEC से है. ओके, सो 12th वाला हुआ S से. प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. मतलब अपने इंटरेस्ट से पहले, खुद के पर्सनल इंटरेस्ट से पहले ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना. तो लिखो इसको प्रिंसिपल ऑफ subrogation. SUBOR subordination. SUBORDINATION subordination of individual interest अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट छोड़ो किसके फेवर में. इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. उसके बाद 13th is E and 14th is also E. E, principle of equity is 13th. Principle of equity. Okay. Next, 14th is प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स. इसमें कई बार छोटे में अलग से एक प्रिंसिपल भी पूछ लेता है, तो हमको सारे 14 पता होने चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ, और 8 मार्क्स के लिए तो पूछता ही है. एस्पिरिट डी कॉर्प्स. मिस 12th वाला कौन सा प्रिंसिपल है? ये वाला है, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. 13th वाला प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. 14th वाला प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स. दैट इज ब्रैकेट में लिखो टीम वर्क. अब एक एक प्रिंसिपल को डिटेल में करेंगे. 8 मार्क्स के लिए इस आंसर को आज ही प्रिपेयर करेंगे. Okay, so principle 14 principles that you see USSR OIC. Okay, first principle of division of work. Has everyone written? Can I clear the board? No miss. मिस Okay, लास्ट guys, वाला पॉइंट को पढ़ने नहीं हो रहा. I will spell it. It is Esprit D Corps. It is ESPRIT. ESPRIT DED CORPSE. Corps, that is teamwork. Okay. Explaining first principle, principle of division of work.
देखो, हाउ टू डिवाइड द वर्क, डिविजन ऑफ वर्क किस बेस पे होगा? डिफरेंट काइंड सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, अकाउंटिंग, मैनेजरियल, ये सब जो भी है ना वर्क है उसको डिवाइड कर दो. तो डिविजन ऑफ वर्क मतलब वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स. क्या क्या? सो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कीवर्ड्स बताऊंगी, आपको टेक्स्ट बुक से, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से करना है. सो प्रिंसिपल ऑफ डिविजन ऑफ वर्क में क्या है? Work is divided into different kinds such as, fast लिखो, work is divided into different kinds such as technical, financial, fast पेन चलाओ छूट जाएगा नहीं तो. Work is divided into different kinds such as technical, financial, commercial, security operations, डेटा की भी सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल. सो हम वर्क कैसे डिवाइड करें? तो वर्क इज असाइंड टू एम्प्लॉयज as per their qualities and capabilities. That is one important point. Work is assigned to employees as per their qualities. उनकी जैसी क्वालिटीज है ऐसा काम दो ना उनको. एंड कैपेबिलिटीज. हम ऐसा क्यों करें? जिसको जैसा काम सुहाता है उसको वैसा ही क्यों दे रहे हैं? बिकॉज हमको क्या चाहिए? दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी लेवल. लिखो, दैट helps in improving efficiency and productivity level. Okay, so this was about principle of division of work. Dad, you see USSR, OIC. तो डिविजन फर्स्ट डी का हमने डिविजन ऑफ वर्क एज इट इज, इसके अंदर के सारे कीवर्ड्स लर्न होने चाहिए. अगेन आई एम सेइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स, सो इसमें मस्ती मत करना. सेकंड, ए, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Principle of authority and responsibility. अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी इज राइट टू टेक डिसीजंस. लिखो, अथॉरिटी इज राइट टू टेक डिसीजंस. आपके फादर की अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या अथॉरिटी है? डिसीजन लिया. इट इज नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, कि हमारे सबऑर्डिनेट से हम वो काम अच्छे से करा ले. ओके, if the manager is given authority to complete a task within a given time, he should be held responsible if he does not complete the task within the given time. ठीक है, तो अथॉरिटी क्या होती है? हम क्यों अथॉरिटी है अथॉरिटी लिए हुए? बिकॉज हमको डिसीजंस ले रहे हैं, बिकॉज वी हैव सर्टन गोल्स जो कि वो अचीव करने हैं. सो अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट लाइन होगा, इट इज नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स
एंड अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है. अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. I'm just writing the key lines. There are more, and you have to refer your textbook for that because सब कुछ लिखाना possible नहीं है. Okay. So principle of division of work. D. A. Authority and responsibility. Third वापस से D आ गया, right? Third D is principle of discipline. लिखो principle of discipline. So Fayol क्या कहते हैं? According to Fayol, discipline is the most essential thing in an organization. डिसिप्लिन ही नहीं है. आज एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन भी देखो, चलो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, टीचर कभी आ रहे हैं, स्टूडेंट कभी आ रहे हैं, टेस्ट हो रहे तो हो रहे, पेपर चेक नहीं हो रहे, कैसे चलेगा वो ऑर्गेनाइजेशन? नहीं चलने वाला है. सो इट इज अकॉर्डिंग टू फेयोल, discipline is most essential thing in the organization. Why discipline? Discipline helps in achieving goals of the organization, and good discipline is the result of effective leadership. ये सब key lines है जो लिखने पड़ेंगे. Discipline helps in achieving goals. Discipline helps in achieving goals of the organization, and it is a result of effective leadership. And basic discipline should be observed at all levels of मैनेजमेंट. सी देखो, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, लो लेवल. बेसिक डिसिप्लिन सबको फॉलो करना, यानी कि सिर्फ नीचे वालों को डिसिप्लिन में रखे अपन जब मर्जी पार्टी करे, ऐसा नहीं हो सकता. सो बेसिक डिसिप्लिन शुड बी ऑब्जर्व्ड. Write down. Basic discipline should be observed at all levels of management. प्रिंसिपल्स, ये 3 प्रिंसिपल हुए. उसके बाद should I erase the board, children? No, miss, 1 second. Fourth principle is डैड के बाद यूसी यूएसएसआर ओआईसी. तो यू से क्या हुआ? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. एंड फिफ्थ इज प्रिंसिपल ऑफ सी से सेंट्रलाइजेशन. फोर्थ इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. ये एग्जाम में अलग से भी आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए, तो इसको याद करना है. प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड.
देयर शुड बी ओनली वन सुपीरियर जिसे ऑर्डर मिल रहा है. इतने सारे लोग एक जने को गाइड करेंगे, क्या होने वाला है. ओके, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स only from one superior. So each member of the organization each member of the organization should receive order only from one superior. इससे क्या होगा? This helps in avoiding confusion. सब काम बता रहे, अब क्या करूं, क्या बताए? एक ही जना काम बताओ ना. This helps in avoiding confusion. It helps in avoiding confusion, managing conflicts, and solving disputes. हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं ना, इसको काम दिया था, ये काम दिया था, क्यों नहीं हुआ. And solving disputes. If a person receives command from from two or more people, there may be a scenario of confusion, and he might not be able to take proper decisions. So that is a wrong approach. So इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. डायग्राम कैसे है? ये जो रेड में डॉट्स है वो कौन है? सुपीरियर्स है. और जो ग्रीन में डॉट्स है वो सबऑर्डिनेट्स है. एक सुपीरियर, सी रेड वाला डॉट है सुपीरियर, और जो ग्रीन वाला डॉट है दैट इज सबऑर्डिनेट. तो दिस इज द राइट अप्रोच कि एक सुपीरियर तीन सबऑर्डिनेट्स को दे रहा है. रॉन्ग अप्रोच क्या है? देखो, ये इसको भी दे रहा है, इसको भी दे रहा है और इसको भी दे रहा है डायरेक्शन सबऑर्डिनेट्स को, और ये आदमी है ये भी तीनों को दे रहा है. अब होगा कंफ्यूजन, कौन से वाले का काम करूं मैं, मुझे पता ही नहीं है. सो दिस इज द रॉन्ग अप्रोच. 1 मिनट लगता है बेटा डायग्राम बनाने में, लेकिन मार्क्स पूरे आते हैं. अगेन व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दिस, पहले ये याद करो, टेक्स्ट बुक साथ में रखो, बिकॉज अकेला शॉर्ट नोट आया तो जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है वो सब लिखना पड़ेगा. तो फोर्थ हो गया डैड यू तक हो गया, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, डैड यू सी. नाउ फिफ्थ वाला is principle of centralization. Principle of centralization. Centralization मतलब एक जगह concentration of powers and authority is centralization. Write down. It refers to
concentration of powers and authorities देखो जनरली क्या होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन में सारी पावर फ्यू हैंड्स में रहती है तो लिखा है इन सम ऑर्गेनाइजेशंस दिस पावर इज वेस्टेड इन फ्यू हैंड्स दिस सिचुएशन अकर्स इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ओनर है छोटे बहुत कम लोग हैं काम करने वाले पावर सारे एक हैंड में है बट इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और अथॉरिटी इज इम्पोर्टेंट सो इसमें आप अपने वर्ड्स में फ्रेम करना स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यदि है मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स दे रही हूँ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस यदि है so there is power is vested in few hands whereas यदि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है देयर इज डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर बिखर जाना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ये भी अलग से आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी there should be according to this principle of centralization there should be a proper balance between centralization and decentralization which depends on size of organization nature of activity etc so according to this principle there should be proper balance between centralization and decentralization in the organization according to size and operations nature of the activity etc according to size of the organization according to size of organization nature of activity etc according to size of organization nature of activity etc so fifth तक हमने खत्म किया now moving on to sixth डैड यूसी तक खत्म कर चुके हैं यूएसएसआर यू से क्या है सिक्स्थ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एस से क्या है सेवेंथ स्कालर चेन 8 से क्या है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड आर से 9th पॉइंट इज रेम्यूनरेशन सो स्टार्टिंग विद द 6th पॉइंट So we are talking about principles of Henry Fayol, 14 principles of management, OC chapter number 1. Fifth principle तक हमने लास्ट में किया था अभी सिक्स्थ प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन तो ये तो सिंपल है
The principle states that there should be one head and one plan in every organization. मतलब मेन जो प्लानिंग है वो एक जना करे और बाकी सब उसको फॉलो करे. So इसमें important लाइन क्या है? Principle states that there should be one head. This is important, children. One head and one plan. In every organization. Okay. So each group of the organization should have same objective and the group should be directed by one manager using one single plan. So जो भी है, group of the organization should have same objective. Excuse me. Each group of organization should have one objective. एक ही objective है जो उन सबको पता है क्या common है. Each group of organization should have one objective. Each group of organization should have one objective. मतलब one same objective. So each group of organization should have one same objective. And the group should be directed by one manager using single plan. And the group should be directed by one manager. हमने बोला था one head देना चाहिए instruction. So the group should be directed by one manager. Using single plan. बिना कीवर्ड्स के आंसर मत लिखो. Point number 6, unity of direction हो गया. Point number 7. सबको स्क्रीनशॉट भेजने वाले ना ग्रुप पे. क्या? इनका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भेज दोगे ना आप? हाँ. So principle of scalar chain, point number 7. Principle of scalar chain is point number 7. ये एग्जाम में इंडिविजुअली भी शॉर्ट नोट में आ जाता है. सो प्लीज अंडरस्टैंड प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है. देयर इज अ हायरार्की, मतलब किसके नीचे कौन काम करेगा उसका हायरार्की है. देखो इसका डायग्राम कैसे होता है, पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड. सी, एक आदमी बैठा है टॉप पे, इसके नीचे 2 जन काम कर रहे हैं, फिर और लोग और लोग. So how does that go? यहां से कोई मतलब कोई बात कहनी है, जैसे ये ए है, हाईएस्ट पोजीशन है, बी सी डी, ओके, ई एफ जी, बकायदा ये डायग्राम बनाना है एग्जाम में. तो यदि डी को कोई बात ए तक पहुंचानी है तो पहले वो बात सी के पास जाएगी,
फिर बी के पास जाएगी, फिर ए के पास, डायरेक्ट नहीं जाएगी. दे हैव टू फॉलो अ प्रॉपर चेन. एंड ए को यदि कोई बात लोअर लेवल्स तक पहुंचानी है तो पहले वो बात ए से ई पे, ई के पास जाएगी, फिर एफ, और फिर उसके बाद जी. ओके. लेकिन कई बार इमरजेंसी के केस में ही सिर्फ, यदि कभी हम नहीं टॉप से लेकर नीचे लो तक फ्लो नहीं कर सकते, यदि डायरेक्ट बात हो रही है, मान लो डी और जी में डायरेक्ट बात हो रही है, सो दिस इज नोन एज अ गैंग प्लैंक, और ये एग्जाम में आ जाता है. तो दिस ये वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, गैंग, GANG प्लैंक, गैंग प्लैंक. तो प्रिंसिपल ऑफ स्कालर चेन में पहली बात तो ये डायग्राम जरूर बना के आना. स्कालर चेन का मीनिंग क्या है, लिखो. स्कालर चेन मीन्स hierarchy of authority from top level to the lower level. Hierarchy, you are following that step. So hierarchy, spelling संभालो, HIERARCHY, HIERARCHY, hierarchy of authority, authority top level की, hierarchy of authority from the top level to the lower level for purpose of communication. Okay, so communication के लिए there has to be a hierarchy. So why to do this? This helps in orderly flow of information. This helps in orderly flow of information. So I'm reading something to you. देखो, traditionally organization used to frame large scale scalar chain which was time consuming. जितना लंबा स्कालर चेन होगा उतना टाइम कंज्यूमिंग होगा. फॉर एग्जाम्पल, अ जनरल मैनेजर इन्फॉर्म्स द डिसीजन टू रिस्पेक्टिव फंक्शनल मैनेजर, देन फंक्शनल मैनेजर विल पास इट टू सुपरवाइजर एंड सुपरवाइजर इन्फॉर्म करेगा फोरमैन को. सो अकॉर्डिंग टू द लेवल. तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. यदि ओनली स्कालर चेन का शॉर्ट नोट आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि स्कालर चेन में ट्रेडिशनली कैसे हो सकता था. जनरल मैनेजर फंक्शनल मैनेजर को कोई बात बताएगा, फंक्शनल मैनेजर सुपरवाइजर को बताएगा, एंड सुपरवाइजर विल इन्फॉर्म द फोरमैन. फोरमैन जो एक्चुअल में फ्लोर पे काम कर रहा है. ओके, फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन and to take speedy decisions, cross communication. अभी गैंग प्लैंक है, वो क्या कर रहा है, स्पीडी कम्युनिकेशन के लिए, communication or direct communication is followed by various organization which is known as gang plan. So आप पूरा एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे. दैट इज, मैं जस्ट आपको छोटा सा टेबल बना के दे रही हूँ. जनरल मैनेजर किसको इन्फॉर्म करेगा, लिखेंगे जनरल मैनेजर ने इंफॉर्मेशन पास ऑन की फंक्शनल मैनेजर को, और ये ट्रेडिशनली हो रहा है. ट्रेडिशनली जनरल मैनेजर ने इंफॉर्मेशन पास की फंक्शनल मैनेजर को, देन फंक्शनल मैनेजर ने वो इंफॉर्मेशन पास की सुपरवाइजर को, और उसने वो इंफॉर्मेशन पास की फोरमैन को. इसको अपने वर्ड्स में डालना. ओके, ट्रेडिशनली दिस यूज्ड टू हैपन. सो एवरी लेवल ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से ये ज्यादा था.
and this is longer chain. This is longer chain of command, but speedy decisions के लिए क्या use होता है? So next point आप क्या लिखेंगे? For speedy decisions, gangplank. For speedy decisions, gangplank is used. This gives direct communication. For direct communication, proper permission and authorities is necessary. But then you talk directly. Direct communication, for direct communication, आपको क्या चाहिए? Proper permission and authorities is necessary. Proper permission and authorities is necessary. So this was about point number 7, principle of scalar chain. उसके बाद point number 8. Point number 8 is again SS, USSR. तो S से principle of stability of tenure. Point number 8, principle of stability of tenure. बस 1 मिनट पीछे जाओ ना. मैंने व्हाट्सएप पे डाला है पिक्चर, आप ले लो वहां से. प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर इज रिलेटेड टू जॉब सिक्योरिटी. कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, ऐसे नहीं बोल सकते कल से मत आना. That is not correct. Okay, that is not moral also. So stability of tenure relates to job security. लिखो. Stability of tenure relates to job security. Why? It should create a sense of belongingness कि ये organization मेरा भी है, मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, है ना? Creating sense of belongingness among the employees is very important. See, I will give you, although this example is not in book, but आप समझो ये बात. एक जो देश का सिपाही है या जवान है, जो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो मरने के लिए तैयार है अपनी कंट्री पे. ये बात तो सही है, तुमने देखा होगा आर्मी, एयरफोर्स, जहां भी जो भी सोल्जर्स है जो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करे, क्या वो अपनी जान की सोचते बिफोर फाइटिंग विद द एनिमी? नहीं सोचते, बिकॉज दे हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दैट दिस कंट्री इज माइन. मेरा देश है, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना है. यदि ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एम्प्लॉयज में आ जाए ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो लॉन्ग आवर्स भी काम करेंगे. दे विल गो बियॉन्ड. वो ऐसे नहीं सोचेंगे कि अरे 8 घंटे हो गए, अब मैं घर जाता हूँ. सो यदि स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की बात करें, कितना टर्नओवर होता है कई कई ऑर्गेनाइजेशन में.
एम्प्लॉय आया, उसको सिखाया, वो छोड़ के चला जाता है, फिर नए को ढूंढो, क्या उसमें पैसा नहीं लगता? उसकी ट्रेनिंग करो, उसमें पैसा नहीं लगता, और वो छोड़ के चले जाए तो यदि टर्नओवर इज वेरी हाई तो आपकी कितनी टाइम, मनी, एनर्जी इसी में वेस्ट हो रही है कि ढूंढो, फिर उसको सिखाओ, फिर वो थोड़े टाइम किया, काम किया, वही भाग गया। सो एम्प्लॉय में क्या होना चाहिए? सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग एम्प्लॉयज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि मेरा जॉब चला जाएगा। इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, अब देखो ये भी कीवर्ड है, इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब affects the efficiency of employees adversely. जबकि यदि जॉब सिक्योरिटी है तो मिनिमम टर्नओवर होगा। टर्नओवर मतलब क्या? कितने लोग तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, वो कम होगा, और वो कम ही होना चाहिए। सो इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब्स अफेक्ट्स द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज। सो एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर कीवर्ड है, एंड जॉब सिक्योरिटी minimizes employee turnover ratio. Very important. Job security minimizes employee turnover ratio. छोड़ के जाने वाले लोग कम होंगे। फिर ऐसा हम सुनते हैं ना कई ऑर्गेनाइजेशन में कि उसने जहां ज्वाइन किया वहीं से वो रिटायर हो रहा है ना? सो वो क्या है? स्टेबिलिटी है। जॉब सिक्योरिटी मिनिमाइजेस एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। जितना टर्नओवर हाई है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, इट इज नॉट गुड फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। सो हमने एस से पॉइंट नंबर 8 किया। अब पॉइंट नंबर 9 इज आर से, यूएसएसआर, आर से प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन लिखो। प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन क्या? फ्री में थोड़ी ना काम करे, बदले में क्या मिल रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो इट इज अबाउट फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज if they work like long term for the organization. So first keyword क्या आया? Financial satisfaction, financial satisfaction to retain employees for long span of time. So हमको रेम्यूनरेशन कैसी देनी है? फेयर रेम्यूनरेशन, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज So I was talking about principle of remuneration, which was point number 9. मिस पॉइंट नंबर 8 बता दिखा सकते हैं एक बार? पॉइंट नंबर 8 मैं क्लास के बाद पिक्चर भेज दूँ, एक बार जगह छोड़ना।
सो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन में हमारा कीवर्ड था फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन। Financial satisfaction, so that we can retain employees for long span of time. So कैसा remuneration देना चाहिए? Next keyword is fair remuneration. That affects the productivity and efficiency of employees. Fair remuneration to effect productivity and efficiency of employees. अच्छा, अब रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड हो वो भी, जिसकी जैसी स्किल होगी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, ओके, उसके हिसाब से हम रेम्यूनरेशन डिसाइड करेंगे। सो स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर। कई कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होता है, तो वैसी कंट्रीज में उस हिसाब से है ना रेम्यूनरेशन दो। कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, जो मार्केट में ट्रेंड है उस हिसाब से रेम्यूनरेशन दो। मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी, of organization etc. So क्या क्या कंसिडर करना है? स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ organization etc. should be considered while fixing the remuneration of employee. So that is point number 9, principle of remuneration. Up point number 10. We are going in such detail for this question, you can understand its importance for your board exams. Point number 10 is principle of order. OIC, अभी father, dad, UC, USSR, OIC. तो point number 10 O से है principle of order. OIC का O, principle of order. ऑर्डर मतलब क्या? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। अरे अपनी मम्मी को याद करो, हर सामान सही जगह रखने को बोलती है कि नहीं? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। जो ह्यूमन रिसोर्सेज या मटेरियल्स है वो कहाँ होने चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज and materials should be in right place
अंडरलाइन करो, ह्यूमन रिसोर्सेज और मटेरियल्स की बात हो रही है. ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स शुड बी इन राइट प्लेस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. So right place or right job should be at right place, right job. Proper utilization of physical and human resources की बात हो रही है. So you will refer the textbook for this point. Principle of order. Principle focuses on proper utilization of physical and human resources. So right place पे भी होना चाहिए and right job पे भी होना चाहिए. जो जिसका काम है वो उसी को दो. Principle of order. Point number 11. Principle of initiative. मिस कब तक ले रहे हो? जब तक ये खत्म नहीं होगा बेटा तब तक. What a question to ask. 14 principles है. I am on 11th. Okay. So 11th point is principle of initiative. Principle of initiative. इनिशिएटिव करते हैं हम कोई चीज को वॉलंटियर करते हैं टू डू इट इन अ इनोवेटिव वे. ओके. सो फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क आइडियाज इन अ इनोवेटिव वे. सो इसमें इनिशिएटिव में फर्स्ट कीवर्ड लिख लो, डू टास्क इन इनोवेटिव वे. ये कीवर्ड है. encourage new ideas at work. Encourage new ideas at work है. Then discussing new ideas and creating healthy organization culture. Discuss ideas and create healthy organizational culture. So that is principle of initiative. 12th principle. Principle of subordination of individual interest to organizational interest. Subordination of individual interest to organizational interest. So मैं ये discuss कर लेती हूँ. Principle of subordination of individual interest to organizational interest. आप इसको लिख सकते हैं फिर टेक्स्ट बुक से. सो इसके अंदर क्या होगा? लेस इम्पोर्टेंस टू योर ओन इंटरेस्ट while taking decisions in the organization. The manager should always consider interest of the whole group rather than interest of single employee. So interest of whole group rather than interest of single employee ये आप टेक्स्ट बुक से देख के लिखेंगे. And similarly the employee should protect the interest of the organization first and his personal interest should be subordinated. For example, in every game, the players are always thinking about winning the match, then raising their own individual records. मैं 100 रन बनाऊंगा ये नहीं देखना है, मेरी टीम कैसे जीते वो देखना है. So this is about principle of subordination of individual interest to organizational interest. That was point number 12. I request you to write it down from your textbook. Now point number 13. Principle of equity. So fair as well as friendly होना चाहिए subordinates में.
जब हम वर्क को डिवाइड करते हैं या डेलीगेट करते हैं, ठीक है, उस समय क्या करना है, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज। एक बात बताओ, कई सेक्टर्स में ऐसे होता है, मेल आर बीइंग पेड मोर देन फीमेल, सो दैट इज नॉट करेक्ट कॉन्सेप्ट। तो वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को डिसअग्री करते हैं। इट इज ऑल्सो सजेस्टेड दैट रेम्यूनरेशन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिपार्टमेंट बट एट द लेवल एट विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग। जिस लेवल पे है, दो डिपार्टमेंट के मैनेजर सेम लेवल पे, उनका सेम रेम्यूनरेशन होना चाहिए, बिकॉज at the level at which they are working. The employees working at same level but at different departments should be paid same wages. इसके लिए ये इक्विटी है, इक्विटी अवॉइड करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट वाज पॉइंट नंबर 13, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। आप अभी ही लिख के मुझे पिक्चर भी भेजेंगे। लास्ट इज पॉइंट नंबर 14, एस्पिरिट डी कॉर्प्स टीम वर्क। अलग से शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में। मिस पॉइंट 13 कहाँ से लिखना है? Point number 13 from textbook only, principle of equity. दोनों टेक्स्ट बुक, All textbook. मैंने 11 तक लिखा है, 12, 13, 14 आप टेक्स्ट बुक से लिख के अभी पिक्चर भेजना मेरे को। सो लास्ट प्रिंसिपल सुन लो, समझ लो कि क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, टीम वर्क। तो अब इसमें टीम वर्क में क्या होता है, मीन्स यूनियन ऑफ स्ट्रेंथ, टीम वर्क, सब मिलके काम करे। तो running any organization is a group activity and human resource are valuable assets of the organization. In fact, कई इकोनॉमिक्स की बुक्स लिखती है, मैनेजमेंट की बुक्स लिखती है, human resource is the life blood of an organization. बिना उसके वो स्केलेटन किस काम का है, बॉडी किस काम का है। यदि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है तो काम कौन करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में। सो ह्यूमन रिसोर्स के कीवर्ड्स क्या है, यूनियन, म्यूचुअल स्ट्रेंथ, teamwork. Difficulties will come but they will be solved quickly. A leader manager should create spirit of teamwork. तो एस्पिरिट डी कॉर्प्स का कीवर्ड क्या हुआ, teamwork. And understanding among employees to achieve organization goals easily, efficiently, effectively. Okay, so ये principles बने क्यों हैं? They are logical and applicable in modern era and ये चाहते हैं कि फटाफट से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए। जस्ट एस्पिरिट डी कॉर्प्स का आप कीवर्ड्स लिख लो। एस्पिरिट डी कॉर्प्स का यूनियन इज स्ट्रेंथ, उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी, human resource, is valuable for the organization. Mutual trust, problems solved quickly. एस्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब ही होता है टीम वर्क। So achieving the organization goals effectively, efficiently. Okay, so ये एस्पिरिट डी कॉर्प्स जो लास्ट 14 पॉइंट है उसके मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं। इक्विटी जो है प्रिंसिपल, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन ना तो लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयज एट सेम लेवल शुड बी पेड सेम अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन।